we have to continue with the topic remaining in the nanotechnology. Okay, so in that session, in last session, we have discussed about the nanotechnology. Okay, so nanotechnology, what is the nanotechnology and what are the various applications of the nanotechnology? Okay, and how the nanotechnology, the you can say the evolution in the nanotechnology begins. ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे तो उसके कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं नैनोटेक के. ओके, तो रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द नैनोटेक्नोलॉजी इन विच वी हैव टू डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस. मैंने कल बात किया था कि वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, चैलेंजेस, रिस्क, ओके, एंड ethical issues with the nanotechnology and ethical issues with nanotechnology. Okay, actually India is the country of the moral and ethics. Okay, that means ki India is, if India is talking about the development of the technology, okay, so simultaneously with development of the technology as and the issues related to that technology, you can say the consequences of the development of the technology. Okay, and what kind of the issues raising, ठीक है, with those development. So India is very much aware about this. Okay, and India is, आपको तो पता ही है कि मोरल और एथिक्स हमारे यहाँ इतना है कि हमारे यहाँ ज़मीन की भी पूजा की जाती है. ओके, दैट मीन्स इंडिया इज एक्सेप्ट दैट द ये जो लैंड है ना, वी हैव गिविंग द, आप कह सकते हो कि एक तरीके का अलंकार, हम उनको अलंकृत करते हैं. कैसे कि ये जो जननी है, भूमि जो है वो क्या है, जननी है, मदर लैंड. ओके, मदर की मदर नाम से उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं. क्लियर? तो द इंडिया इज द country of the moral and ethics. Okay, so several types of the ethical issues are here also related to the nanotechnology. Okay, so if you are just talking about the challenges related to this, so the most immediate challenges in nanotechnology is that we need to learn about the material and their properties at the nanoscales. Okay, listen, 1 nanometer is equal to 10 to power 1 nm is equal to 10 to power minus 9 meter. Okay, 10 to power minus 9 meter. So you can assume that this is very teeny particles. Okay, teeny particles in size. Okay, that means at this scale, at this nano scale, the properties, okay, and the behavior of the material is changed completely. Fine. So due to this issues, there are several problems is arises due to the teeny size particles. Okay, the issues like the best terms which is giving for the issues related to the nanotechnology, this is the nanotoxicology. Nanotoxicology. ओके, देखो ऐसा है ना कि आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, टीनी पार्टिकल्स होता है. ओके, तो दैट मीन्स कि in the nanotoxicology we can consider that if the particle size is very आप क्या बोल सकते हो, वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट एक्चुअली, and basically this is nano in size. Okay, 10 to power minus 9 meter. Okay, so it is not visible with the naked eye. Okay, तो नॉर्मली वो विजिबल नहीं होगा, ठीक, किसी भी ऐसे नॉर्मली हम उसको देख नहीं पाएंगे. क्लियर? सो इन दिस केस इफ एनी टाइप्स ऑफ द, आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके का अगर कोई पॉल्यूशन क्रिएट होता है, पॉल्यूशन इन द सेंस कि
if they suppose that there is a project inside any premises, ठीक है, and which is based on the development of the nano materials. Clear? Nano materials. अभी जब हम बात करेंगे ना, तो नैनो मटेरियल्स इन नैनो मेट्रोलॉजी की बात करेंगे. नैनो मेट्रोलॉजी, ये दोनों साथ में लिखा जाएगा, ऐसे लिख लो. नैनो metrology. What is the metrology? Metrology is the branch of science of the measurement. Okay, and nanometrology, that means in which we are study about the measurement of the nanoscale particles, okay, or nanoscale molecules. Clear? Okay, so this is nano in size due to this is not visible with the naked eye. Okay, so in this case what should happen? किसी भी मतलब आप ये समझो कि जब वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो in the atmosphere, okay, if it is moving freely, okay, so through the respiration or through the breathing, okay, it can easily enters in our body. Okay, not in only human body, it can also enters in the different living organism, or you can say the different animals. ठीक है, so this kind of materials may lead to the toxicity. Okay, leads to the toxicity, and the toxicity, okay, toxicity lead करेगा, so this is actually in harmful for the our body. Okay, when we are just discussing about the nanotoxicology, so this is nanotoxicology is a आप कह सकते हो कि this is a branch of bio nanoscience. Bio nanoscience. Why this is the bio nanoscience? Because we are just studying the toxicity is created or lead by the nanoparticles in any living organism. Okay, in any living body. Clear? So living body, that means there is a what there is there is a consideration of what the living material, living organism, like the animals and the human beings. Okay, so this is a branch of the bioscience, toxicology, nanotoxicology, and in which we deals with the study and the applications of the toxicity of the nanomaterial made of inert element like the gold become highly active at nanometer dimension. Okay, this properly may pose a threat to the environment and to human beings. For instance, diesel nanoparticles have been found to damage the cardiovascular system. ठीक है, in the human beings. अच्छा, देखो एक्चुअली होता क्या है कि when हमने पहले ही देखा था कि when the particle size is reduced at the nano scale, okay, so the physical as well as the chemical characteristics of the material get changed. ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, बिहेव पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा. क्लियर? तो हियर इज द एग्जांपल इज लाइक इफ द नैनो पार्टिकल्स ऑफ द डीजल, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ द डीजल इज मूविंग फ्रीली, ठीक है, इन द एनवायरमेंट, एंड व्हेन इट इंटर्स टू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो इट मे लीड द डैमेज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. ओके, एंड ऐसी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं. इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नैनो पार्टिकल्स ऑफ द गोल्ड, ओके, तो गोल्ड भी क्या है, एक तरीके का मेटल है, ठीक है, तो क्या बोल सकते हो आप उसको, entering amount of the nanoparticles of the gold may lead the several kind of the abnormalities or difficulties in our body. ठीक है, चलो द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है लाइक द नैनो पॉल्यूशन. द नेक्स्ट वन इज द नैनो पॉल्यूशन. ओके, व्हाट इज द नैनो पॉल्यूशन? नैनो पॉल्यूशन इज आप इसको कंसिडर, दिस इज अ वर्ड, दिस इज जेनरिक नेम फॉर ऑल वेस्ट, ठीक है, generated by the nano device or during the nano materials manufacturing process. ठीक है, that means when the nano pollution is occurs, suppose that if any
premises is processing for the developments of the nano materials. Okay, और उसमें क्या है कि जो भी बेसिक उसमें कॉशंस चाहिए हो, ठीक है, वो प्रीमाइसेस में अवेलेबल ना हो, लाइक द फिल्टर प्रोसेस, लाइक द एयर फिल्टर्स, ओके, और यू कैन से द डेवलपिंग चैम्बर, ठीक है, इन विच द नैनो मटेरियल्स शुड बी डेवलप्ड, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो, या मतलब जिस पैरामीटर पे चाहिए उस स्टैंडर्ड पे अवेलेबल ना हो, तो इन दैट केस देयर may be a chances of the leakage of the what, leakage of the nano materials. Okay, so in that case what should happen? In that case it enters into the environment. Okay, the they it is actually freely moving in the environment. Okay, so this is calling the, and this is known as the what, nano pollution. Okay, nano pollution. ठीक, apart from this, besides of the what, the development of the nanomaterials, okay, there is another one thing is that the, if there is a what, open dispose of the nanomaterials, okay, so in the environment, if the nanomaterials is what, nanomaterials or nanomaterials means what, that means like the nano waste, okay, nano waste like the devices, okay, or you can say the nano carbon tubes, okay, ऐसा समझे, nano switches, nano metallic devices, nano क्या बोल सकते हैं उसको, diode, triode, okay, so this may also cause the what, nano pollution, ठीक है, nano materials waste, okay, so nanomaterial waste can also leads the nano pollution. Okay, so the kind of the waste may be very dangerous because of its size. हाँ, obvious सी बात है, हमने पहले ही बोला था कि these are tiny particles. Okay, and due to the reduction in the size of the materials, the physical as well as the chemical characteristics get changed. Okay, so in that case this may lead a very आप बोल सकते हो harmful toxicity. Okay, when it enters into the body. Clear? So this kind of the waste products are very dangerous in nature, may be dangerous in nature, and because of its reduced size. Okay, so it can float in the air and might easily penetrate animal and plant cells, causing the unknown effect. Okay, that means अब ये देखो कि दिस इज हार्मफुल फॉर द एनिमल एज वेल एज दिस इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एज वेल. ठीक है, मतलब कि प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा ये. ठीक, प्लांट्स के मतलब जो भी प्लांट होता है, तो प्लांट के भी सरफेस को पेनिट्रेट करके वो इंटर कर सकता है. ओके, एंड सम अननोन effect may be rises. Okay, so here is the living organism may not have appropriate means to deal with the nano waste because they do not appears in nature. अब देखो यही बोल रहे हैं कि हमें अगर पता होगा, ठीक, कि इस एरिया में क्या है, नैनो वेस्ट पड़ा हुआ है, और यू कैन से दिस दिस एरिया इज डिस्टर्ब विद द नैनो पॉल्यूटेंट्स. ओके, तो हम उस एरिया में नहीं जाएंगे. बट हाउ कैन वी ऑब्जर्व दैट दिस एरिया इज पॉल्यूटेड विद द नैनो पॉल्यूटेंट्स? ओके, कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम? बिकॉज देयर साइज इज वेरी टीनी. ओके, एंड मतलब हम उसको नॉर्मली देख कर, अब जैसे होता है ना कि अब कहीं पे क्या है, अगर जो गार्बेज होता है, ठीक है, उसमें आग लगी हो, जल रहा हो, ठीक, धुआं निकल रहा हो, बहुत गंदा धुआं, एंड इट इज़ लीडिंग द पॉल्यूशन. ठीक है, तो आप उस जगह पे नहीं जाते हो. लेकिन इन दिस केस अगर वो चीज़ हमें दिख नहीं रहा है, देन व्हाट शुड वी डू? ओके, तो इसमें हमारी जो डीलिंग है नैनो वेस्ट के साथ, वो बहुत अच्छी नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से नैनो पॉल्यूशन जो होता है, दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस. ओके, इट इज़ प्रोबेबली वन ग्रेट चैलेंज टू द नैनो टेक्नोलॉजी हाउ टू डील विद इट्स नैनो पॉल्यूटेंट्स एंड द नैनो वेस्ट. ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर नॉर्मल वेस्ट की तरह अगर लोगों ने नैनो वेस्ट फेंक दिया, तो हाउ कैन वी डील विद देम. ठीक है, ओके, चलो. सो दीज आर द
challenges and the risk related to the nano technology. Okay, you can say the development of the nano materials. ठीक. अच्छा. So this is all are about the what applications as well as the nanotechnology initiation, or you can say the problems or issues related to the nanotechnology we have discussed. ठीक है. एक जो इसमें और बात रह गई है, दिस इज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया. इन ओके, मतलब व्हाट इज द status of the nanotechnology in India. Okay, and the nanotechnology in India, the nanotechnology is started from where? ठीक है. Okay, so they here is the government of India, the government of India's Department of Information Technology, Department of Information Technology. ठीक है, ये नाम याद रखना आप, डिपार्टमेंट ऑफ द DOIT. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. एक्चुअली the Department of Information Technology is started the first program, or you can say started the first project. ठीक है, in nano technology. कब? In March 2004. Clear? So in the year of the 2004, the Department of the Information Technology of Government of India actually started the first project in the nanotechnology. Okay, and in the March 2004, actually the government have provided the fund for this. ठीक है, fund for the nanotechnology project. Okay, ऐसा लिख सकते हो इधर, provides funds, okay, for nanotech. Okay, but there was a problem. The problem was that the investment in the research and development in the nanotechnology by India, ठीक है, by India was a very, आप क्या बोल सकते हो, इज अ वेरी was a meager actually. ठीक है, बहुत माइनर था. ठीक है, एज कंपेयर टू द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट. ठीक, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ काम नहीं हो पाया. ठीक है. तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ दिस IT, दिस DOIT actually initiated a nanotechnology development program to create the infrastructures for research in the nanoelectronics and the nanometrology. Okay, तो इसमें क्या किया कि जो DIT है, DIT have actually create nanotechnology development program. This is initiated nanotechnology development program. Okay, initiated what? Nanotechnology development program. Okay, and this program is this program was for the purpose of the create the infrastructure to create infrastructure. Okay, to create infrastructure for research in infrastructures for research in nanoelectronics and nanometrology. Okay, so by this year, in the 2004, actually this Department of the Information Technology of the India have initiated a nanotechnology development program. Okay, and this program is actually
with the purpose of with the purpose to create the infrastructures in the nano electronics and the nanometrology. Okay, so nanometrology, that means this is actually the branch of the metrology in which we are just study about the measurement of the particles at the nano size, so this is considered as a nanometrology. Okay, so इसमें हुआ क्या ना कि इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, तो स्कॉलर्स आर आल्सो participated in this project. Okay, and by this project we have actually actually there was fund for the small and the medium level research project in the specific area relate that means for the development of the nanomaterials. Okay, nano devices, carbon nanotubes and nano systems. Okay, यहाँ पे जो फंड मिला था, यू कैन से दिस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज स्टैंड फॉर द nano materials, development of the nano materials, or also you can say the nano devices and nanotubes, you can say carbon nano tube. ओके, तो एक बहुत ही छोटे डिवाइस के छोटे क्या डिवाइसेस की डेवलपमेंट से द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, अच्छा, तो ये तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, ठीक है, बाय द ईयर ऑफ द 2004. बट इन द ईयर ऑफ 2005, ठीक है, आप इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक, हम आगे चलते हैं. तो बाय द ईयर ऑफ 2005 देयर इज 2 इंस्टीट्यूट्स, IISc बेंगलुरु and IIT Bombay. Okay, so there was 2 institutes. Okay, and both the institutes actually, ठीक है, initiated, ये प्लस का साइन है, मतलब दोनों साथ में मिल गए, that was a joint venture. Okay, and both institute they initiated a major project. Okay, major project regarding nanotechnology. Okay, regarding nanotechnology. Clear? So these IISc Bangalore and IIT Bombay have actually started. ठीक है, and these both institution has given the specialized expertise available at these institution. ठीक है, तो ये जो भी मतलब यहाँ पे थे, they are providing the expertise. Okay, and here some postgraduate research would also be part of this project. Okay, postgraduate research, that means if any scholar or students wants to do their post graduation in the nanotechnology, so these 2 institutes by their mega joint project, they have provided the course in the post graduation program. Okay, तो ये दोनों मिल करके 2005 में ऐसा काम किए. And another major project on the nanometrology, an essential requirement for the development of the nanotechnology in the country, was begun in 2005
by the 2005 at the National Physical Laboratory, Delhi. Okay, so by this year, in the year of same year 2005, the National Laboratory, okay, National Laboratory, sorry, National Physical Laboratory, ठीक है, National Physical Laboratory, okay, कहाँ पे ये, इन दिल्ली, okay, so National Physical Laboratory Delhi actually have started another major project, ठीक है, major project on, एक्चुअली आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि प्रोजेक्ट ऑन, स्टार्टेड द प्रोजेक्ट on nano metrology, okay, nanometrology. That means this is the project, or you can say the project of this NPL Delhi, National Physical Laboratory Delhi, okay, for the purpose of the study of the nanometrology, okay, that means study of the measurement of the nanoparticles at nanoscale. Clear? So the project aim at the what? This is providing the traceability to scanning probe microscope, ठीक है, industry and all other further lines with step height, surface textures, measurement. देखो ये हर चीज मतलब क्या है, this is the actually measurement of the nano particles, okay, and the calibration of the low voltage, low current and low electric charges in the category of small and medium level project. About 18 R&D project had been initiated as of 2008 end. That means ये बोला जा रहा है कि by the year of the, you can say 2008 ends तक, okay, approx 18 nano projects have initiated, ठीक है, हैव इनिशिएटेड, ठीक, तो उसमें बहुत कुछ था, जैसे अब उसमें बताया ना कि इंडस्ट्री एंड ऑल अदर फॉर्म लाइन विथ स्टेप हाइट, सरफेस टेक्सचर्स, मेजरमेंट, ओके, ऑफ द मटेरियल्स, ओके, ये सब सारी चीज़ें इसमें क्या थे, इसका एम था, ओके, तो इस तरह से हमारा इंडिया क्या क्या धीरे धीरे नैनो टेक्नोलॉजी में काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ एक चीज़ और आप समझेंगे कि इन द ईयर ऑफ द 2007, ठीक है, by the year of the 2007, the government of India actually approved a mission which is known as the nano mission, ठीक है, कब 2007 nano mission, okay, and this is approved by government of India, GOI, government of India, and the mission aims at making the India a world class center for the nanotechnology, ठीक है। अगर इसका एम देखोगे तो एम क्या था, मेकिंग इंडिया a world class center for nanotechnology, okay, so that was the aim, ठीक है, दैट वाज द एम ऑफ दिस नैनो मिशन, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया ना, इन दिस द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हमारा DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, DOSNT is acting as a nodal agency, okay, so this is a nodal agency
for the Nano mission 2007. Okay, and this mission actually the आप बोलें कि what are the areas, what are the base major areas of this mission. So thrust areas of this mission are the capacity building in the research in nanoscience and technology. Okay, that means capacity building in the research in nanoscience and the nanotechnology. That means the premises as well as the expertise as well as the equipment which are required for the development of the nanotechnology. Okay, so the development of these all the three aspects आप कह सकते हो. ठीक है, इन सब का डेवलपमेंट के लिए क्या किया कि दिस इज द थ्रस्ट एरिया ऑफ दिस नैनो मिशन. ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द नेशन. ठीक है, रिगार्डिंग द नैनो टेक्नोलॉजी. ओके, ट्रेनिंग एंड क्रिएशन ऑफ अ लार्ज स्किल्ड मैन पावर बेस. ठीक है, दैट मीन्स the aim of this nano mission 2007 was that we have to develop a potential manpower. ठीक है, potential manpower for the nanotechnology development. ठीक है, next the development of products and process for the national development especially in the field such as material development, drug delivery and the safe drinking water. ठीक है, तो इन सब चीज़ के डेवलपमेंट के लिए भी इसका क्या था, एक पर्टिकुलर इसका थ्रस्ट एरिया था. फाइन. ओके, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लिंकेज बिटवीन इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड प्रमोटिंग द पीपीपी. ठीक है, देखो यहाँ पे जब बात करेंगे द प्रमोशन ऑफ द पीपीपी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. दैट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रहेगा प्लस प्राइवेट कंपनीज एंड साथ में पार्टनरशिप करेंगे. इनका क्या होगा, पार्टनरशिप for the purpose of what? For the purpose of development of the nanotechnology in the India. Clear? So this triple P is here stand for the public private partnership. Okay, in which the government of India have signed the several types of the agreement and the MOUs. ठीक है, you can say treaty तो मत बोलो, agreement आप बोलो. ठीक है, क्योंकि within the country हो रहा है. So the government of India actually signed the some agreements with the many institutions. Okay, regarding this nanotechnology development. ठीक है, so promoting the foreign collaboration the nanotechnology program. This is also was the thrust area of this nano mission 2007 कि हमें क्या क्या करना है कि डेवलपमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द फॉरेन कोलैबोरेशन इन द नैनो टेक्नोलॉजी. ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा ना, जैसे अगर यहाँ पे हो गया इतना आपने लिखा, इसको याद करने का तरीका है, आपने इतना लिखा. ठीक, फाइन. आफ्टर दैट ऐसा आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि थ्रस्ट एरियाज. ठीक, इसमें आप स्टार बनाकर लिख सकते हो. तो सबसे पहला थ्रस्ट एरिया था क्या, कैपेसिटी बिल्डिंग. तो फर्स्ट एरिया ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग. ओके, तो कैपेसिटी बिल्डिंग इन व्हाट, कैपेसिटी बिल्डिंग इन द रिसर्च इन द नैनो साइंस एंड द नैनो टेक्नोलॉजी. ठीक है, सेकंड जो आएगा आपका, द सेकंड पॉइंट वाज दैट दिस इज द ट्रेनिंग एंड क्रिएशन ऑफ skilled manpower. Okay, skilled in what, skilled in nano science or nano technology. That means the manpower which are involving in the development of the nanotechnology, they are very well skilled. Okay, कि how to deal with the nanomaterials, how the nanomaterials can handle. ठीक है, इन सब चीज़ का उसको नॉलेज होना चाहिए पूरी तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स, डेवलपमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट. ओके, and as well as processes. ठीक, so development of the product and processes are also the major thrust area of the nano mission. Okay, so next क्या है, establish the linkage okay, between industry. ठीक है, and research institution
research research and educational institution, educational institution. Okay, that means we have to the we have, that means कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड to make the partnership, you can say, to make the link between the what, between the program and the educational institutions and आप कह सकते हो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है कि नेक्स्ट इज द व्हाट, नेक्स्ट इज हियर फॉर द ट्रिपल पी मॉडल. ट्रिपल पी मॉडल, ट्रिपल पी इज हियर स्टैंड फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ओके, और आज जो है इस ट्रिपल पी पे मोदी गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम करती है ना. पार्टनर, ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज हियर स्टैंड फॉर द ट्रिपल पी मॉडल. दैट मीन्स कि उसमें क्या है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी होगी, ठीक है, उसमें क्या है कि देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर. ओके, प्राइवेट सेक्टर के साथ वो पार्टनरशिप करके, जैसे सपोज दैट कि अभी आप ट्रिपल पी का एक अच्छा एग्जांपल ये देख सकते हो कि जैसे बहुत सारी जगह पे जो सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, तो सम प्राइवेट कंपनीज हैव टेकन द अथॉरिटी, ठीक है, फॉर द पावर सप्लाई. ओके, सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. क्लियर? ओके, एंड द प्रमोटिंग द फॉरेन कोलैबोरेशन एज वेल. ठीक है, द प्रमोशन ऑफ foreign collaboration, okay, foreign collaboration in which sector? Obviously बात है in the nanotechnology program. Okay, so this is the 2007 nano mission. ठीक है, तो ठीक है, देख लेना इन चीज़ों को, आप देख सकते हो. ठीक, ओके, तो by the year of 2007 this nano mission is initiated. ठीक है, एंड इन द फरवरी 2014, देखो फिर से आप, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लिए होगे, नहीं तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ठीक है. चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है. तो बाय द ईयर ऑफ 2014, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली गिविंग द अप्रूवल टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम. ठीक है, मतलब 2007 में लॉन्च्ड फर्स्ट टाइम, इनिशिएटेड. ठीक है, एंड आफ्टर द 7 years गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रियलाइज़ हुआ होगा कि इनिशिएशन जो था हमारा वो अच्छा था. ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट देखने को मिला हमें. फाइन, तो बाय द ईयर ऑफ 2017, ठीक है, सॉरी 2014, सेंट्रल गवर्नमेंट गेव इट्स अप्रूवल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द नैनो मिशन. ठीक है, इन द सेकेंड फेज. देखो 2007 में इनिशिएट किया गया था, इनिशिएटेड. ठीक, 2014 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिवन द अप्रूवल फॉर द continuation of phase 2 of nano mission. ठीक है, nano mission, and actually this is the 12th plan period. ठीक है, और 2012 से 17 तक चलेगा ये. ठीक, फ्रॉम 2012 टू 17. ठीक, so the mission program will target all scientists, institutions and industries in the countries. ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया बाय द सेकेंड फेज कंटिन्यूएशन ऑफ दिस नैनो मिशन. ओके, एंड आफ्टर दैट it will also strengthen the activities in the nanoscience and the technology by promoting the basic research. Okay, by basic research
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जो जो उसमें किया गया था, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ नेशनल डायलॉग्स and the nano applications and the technology development according to an official statements of its ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, ये सब सारी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि द मिशन ठीक है, अच्छा है, सक्सेस है हमारा, एंड वी आर डूइंग द व्हाट, डूइंग द developmental activities in the nano and technology center, sorry, nanotechnology center. Clear? So in the the nano mission in this new phase will also make the greater effort to promote the applications oriented research and development, okay, so that some useful product processes and the technologies emerge. It will be anchored in the Department of Science and Technology and steered by a nano mission council chaired by an eminent scientist. देखो ऐसा है कि जैसे एप्लीकेशन बेस्ड डेवलपमेंट, ओके, और यू कैन से इसको क्या बोल सकते हो आप कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, दैट मीन्स इफ देयर इज द need of the what development of the some kind of the nano carbon tubes, or you can say the carbon nanotubes. Okay, so the India is working एप्लीकेशन ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ओरिएंटेड मॉडल। तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है, ऑफनली जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, तो उसका डेवलपमेंट हम सबसे पहले करेंगे अंडर दिस नैनो मिशन 2007। क्लियर? तो बस करते हैं, बहुत करते हैं इन द नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत हो गया। तो और कुछ बचा तो नहीं है आई थिंक, मेरे ख्याल से। सम अदर कंट्रीज है स्टेबल नेशनल सेंटर। हाँ, यही बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द सम अदर कंट्रीज हैज established a national center for the nano materials at the International Advanced Research Center for the powder metallurgy and new materials in Hyderabad। को ऐसा सेंटर इन्होंने डेवलप किया है बाय द कोलैबोरेशन ऑफ द अनदर कंट्री, कोलैबोरेशन विद द अनदर कंट्री। So several scientists and researchers in the country are presently engaged in developing this knowledge intensive and enabling technology। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं। ओके, दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज इन दिस नैनो टेक्नोलॉजी रिगार्ड्स। ठीक है, तो उसके बारे में वो सब बातें और रिसर्च हो रही हैं। ठीक, तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर यू एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर द नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी हमने बात कर लिया है। आफ्टर दैट वी विल जस्ट discuss about our other topics, other chapter। Okay, the chapter name is the robotics। ठीक है, आज की दुनिया में रोबोटिक्स क्या है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ओके, तो द रोबोटिक इज अ what robotics is a very fast growing branch। ठीक है, very fast growing branch of the technology। And why this is considered as a fast going branch? Actually ऐसा है कि टुडे दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इफ एनी कंट्री इज एक्चुअली इस्टेब्लिशिंग देयर, क्या बोल सकते हो उसको, वर्चस्व बोल सकते हो ना, वर्चस्व समथिंग कि हाँ अपना एकदम साख बनाना, क्रेडिट बनाना। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा ना कि उसको टेक्नोलॉजी को बिल्कुल एकदम अच्छे से डील करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, एंड एक मेजर रीज़न यहाँ पे और भी है कि वाई दी रोबोटिक्स इज अ फास्ट ग्रोइंग व्हाट टेक्नोलॉजी। Actually, in the robotics, we will discuss about the humanoid robots। Okay, so humanoid robots appears as like human being। ठीक है, अभी जब हमसे बात करेंगे ना कि what are the parts of the robots, जैसे उसमें मैनिपुलेटर, एक्चुएटर्स, इन सब की बात करेंगे ना, मोटर्स वगैरह की, तो हम देखेंगे कि इन केस ऑफ द ह्यूमनाइड रोबोट्स, ठीक है, the appearance is look
लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम पूरा उसके ऊपर पूरी प्लास्टिक सिलिकॉन लेयर वगैरह सब उस पर एकदम कंप्लीट, उसको एकदम ह्यूमन की तरह लुक लाइक करता है वो, बिल्कुल. एंड इफ and they are artificially intelligent also, okay, so they have ability to take the decision, they have ability to analyze the situation, okay, and analyze the situation and performs regarding that. ठीक है, तो ये सब उनके अंदर क्या होती है, क्वालिटी होती है, किसके, रोबोट्स के अंदर. So suppose that if any types of the hazardous condition, or you can say a condition is occurs which is actually fatal, ठीक है, which is actually fatal and fatal for the what life of the human beings आप कह सकते हो, ठीक है. So this is a dangerous condition, ठीक है, for the life of human beings. So in that case the robot can easily perform the task, ठीक है, the robot can easily परफॉर्म दी टास्क. तो उससे क्या होगा कि एक ह्यूमन वैल्यू भी मेंटेन रहेगा, ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ थ्रेट नहीं होगा. क्लियर. तो दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ व्हाट, द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रोबोटिक. अच्छा, उसके अलावा वी आर द ह्यूमन बींग्स, ओके, द सेवरल टाइप्स ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी. क्लियर. दैट मीन्स इफ वी आर डूइंग समथिंग, सो आफ्टर सम टाइम्स आवर पोटेंसी गेट डिक्रीजेज. ठीक है, जैसे अभी हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तो एक समय ऐसा होगा कि हम क्या करेंगे कि वी रियलाइज दैट वी आर फेंटेड, ठीक है, हमारी एनर्जी डाउन करेगी. बट इन द केस ऑफ द रोबोट्स, ओके, देयर इज ओनली वन रीजन टू स्टॉप द वर्किंग ऑफ द रोबोट्स, एंड दिस इज द डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी. ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ द पावर. अगर उनको पावर कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है, डिस्चार्ज सॉरी बैटरी उनकी अगर डिस्चार्ज नहीं होगी, पावर कट नहीं होगा, तो इन दैट केस द रोबोट कैन परफॉर्म कॉन्टिन्यूसली. ठीक है, परफॉर्म कॉन्टिन्यूसली, वो लगातार काम कर सकता है, पूरे 7-7, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सेम काम फॉलो कर, सेम वर्क कर सकता है. ठीक है, डे बाय डे कर सकता है. तो दिस इज ऑल्सो द रीज़न. ठीक है. उसके अलावा when we will talk about the robots, the applications of the robotics, okay, so in the applications of the robotics हम ये देखेंगे कि क्यों रोबोटिक्स इतना ज़्यादा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट फेज में है, क्यों इतना ज़्यादा इसका तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, फास्टेस्ट डेवलपमेंट. चलो आ जाओ देखते हैं, बात करते हैं robotics. Clear. Okay, actually the robotics is a branch of the engineering, आप कह सकते हो robotics the branch of engineering that deals with the design, okay, construction, operation, structural disposition, manufacture and the applications of the robots. ठीक है, आप ये बोलो कि robotics is the branch, robotics is the branch of science, okay, and science that deals with design, construction, collaboration, okay, construction, collaboration, structural disposition, structural disposition, manufacture and application, manufacture and application of robot, okay, of robot. This is considered as the robotics. That means in the robotics we can design the robots, we can construct the robot, okay, and we will structural disposition of the robot,
we deals with the structured dispositions of our robot. We will manufacture the robots, and we can the, take the what utilize the applications of the robots. Okay, chalo. So this is called the robotics. Actually, the word robotics was the firstly used, or you can say the first time point or print by the Isaac Asimov. Okay, the word robotic firstly coined by Isaac Asimov. Okay, Isaac Asimov. So Isaac Asimov was the scientist who have actually firstly coined the word robot. Okay, so the what is the word robot, and from where the word robot came from? ठीक है, तो जो वर्ड रोबोट है ना, रोबोट 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 इज एक्चुअली चेक वर्ड, चेक वर्ड. Okay, and this is the meaning of this robot is the forced labor, forced labor, or you can say compulsory service. Okay, compulsory service. That means this is the meaning of the what? Meaning of the robot. ठीक है, so robot is actually Czech word, and in the Czech Republic dictionary, the robot is known as the robota. क्या बोलते हैं इसको? रोबोटा, बूम बूम रोबोटा, राइट. मैंने रोबोट मूवी देखी ना, ना गाना है बूम बूम रोबोटा. क्लियर? So robot means so robot is a word arises from the Czech word. So this is the robota, and the meaning of the robota means this is the forced labor, or also it is considered as the compulsory सर्विस. ओके, फोर्स्ड लेबर और कंपलसरी से थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग रहा होगा, बिकॉज इफ वी आर गिविंग द कमांड टू द रोबोट, ठीक है, हमने रोबोट को कमांड किया, यू हैव टू परफॉर्म दिस. ठीक, तो इन दिस केस दिस इज द कमांड, एंड रोबोट शुड follow, definitely follow the command given by us. Okay, तो एक तरीका क्या है ये? फोर्स्ड लेबर. इसका मतलब इसीलिए बोलते हैं फोर्स्ड लेबर, एंड कमांड है तो सर्विस मिलना ही मिलना है. दिस इज कंपल्सरी. ओके, so that means this is the compulsory service. Clear? वैसे फर्स्ट रोबोट आपको अगर पूछा जाए व्हाट वाज द फर्स्ट रोबोट, कौन सा था, हु इज द फर्स्ट रोबोट? ओके, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, द फर्स्ट digitally operated and programmable robot, ठीक है, was द यूनिमेट. उसका नाम था यूनिमेट. ओके, द यूनिमेट, एंड दिस इज इंस्टॉल्ड इन 1961. कब इंस्टॉल किया गया ये? 1961. ओके, तो इन द न्यू जर्सी देयर वाज, आप कह सकते हैं इन्वेंटर, ठीक है, जिन्होंने इन्वेंट किया था जॉर्ज देवोल. ठीक है, इज अ साइन इन्वेंटर कौन था इसका? जॉर्ज डेवोल. जॉर्ज डेवोल फ्रॉम द न्यू
जर्सी यूएस। ओके, तो न्यू जर्सी यूएस से जो एक साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे, उनका नाम था जॉर्ज डेवल। तो जॉर्ज डेवल have actually installed the first digitally operated and the programmable robot. ठीक है, first digitally operated and the programmable robot. Clear? The robot name was the Unimate. Okay. So today the commercial and the industrial robot are in the widespread use, performing jobs more cheaply and with greater accuracy एंड रिलायबिलिटी दैन ह्यूमंस। ठीक है, अब ऐसा बोल रहे हैं कि अभी इस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन में हैं, एंड दे हैविंग द ग्रेटर एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी एज वेल एज द दे एक्चुअली परफॉर्मिंग द जॉब मोर चीपी। दैट मीन्स कि अगर सपोज करो रोबोट का मतलब केवल मशीन से है, ठीक है, और मशीन विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंसिडर एज अ वर्ड रोबोट। क्लियर? अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ मशीन, ठीक, तो वो एकदम वो वाला आंसर देना है आपने ना, कौन सा, चतुर रामलिंगम वाला या वायरस वाला, है ना? नहीं सॉरी, वायरस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरे बड़ा अच्छा नाम है यार, रेंचो, रेंचो, यस, हाँ, है ना, 3 इडियट्स में है। क्लियर? तो मशीन, मशीन क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट्स को जो क्या करे, कम करे, रिड्यूस करे, तो मशीन कहलाता है, राइट? तो रोबोट क्या है ना, रोबोट जो है वो बिल्कुल ह्यूमन वैल्यू ही खत्म कर देगा बिल्कुल, ठीक है, आने वाले टाइम में ह्यूमन वैल्यू खत्म कर देगा। अच्छा, देयर वाज अ क्वेश्चन इन दैट, क्वेश्चन वाज दैट कि कैन रोबोट रिप्लेस द ह्यूमन बींग्स कम्प्लीटली? ठीक है, क्या रोबोट जो है वो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर सकता है? तो क्या इसका आंसर हो सकता है? देखो ऐसा है कि बाय द ईयर ऑफ इन द ईयर ऑफ द 2007 फेसबुक हैव एक्चुअली डेवलप द 2 रोबोट्स। ठीक है, ऐसा हमने न्यूज़ में सुना था। हाँ, फेसबुक एक्चुअली डेवलप द 2 रोबोट्स, एंड वो क्यों डेवलप किया था, उसका अपना कुछ प्रोसेस कह सकते हैं, ऑपरेशंस वो करने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे कुछ काम वो डील कर लेगा, ऐसा समथिंग लाइक, है ना? तो द फेसबुक हैव डेवलप द 2 रोबोट्स, एंड उसने क्या कर रखा था, पर्टिकुलर कमांड दे रखा था, ठीक है। तो बाई द प्रोग्राम, यू कैन से प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन द बोथ रोबोट्स, ठीक है, दे कैन टॉक टू ईच अदर, ठीक है, वो आपस में बात कर सकते थे। बट आफ्टर सम टाइम्स दे बोथ रोबोट्स हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, एंड थ्रू दैट डिफरेंट लैंग्वेज दे हैव स्टार्टेड टू कन्वर्सेशन विद ईच अदर, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि वो एक अलग ही लैंग्वेज डेवलप कर, है ना। अब वो अलग लैंग्वेज डेवलप कर लिया, तो दैट वाज क्या मतलब, वो मतलब समझ में नहीं आती थी, जो मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनको ये वो लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी, एंड दे आर एक्चुअली कन्वर्सेशन टू ईच अदर, ठीक है। तो एक दूसरे से क्या करते थे, बात करते थे उसी अनदर लैंग्वेज में। तो यूएस गवर्नमेंट हैव गिविंग द नोटिस टू द फेसबुक कि ऐसा है कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो यू हैव टू बी अनइंस्टॉल दिस मशीन, ठीक है। तो फिर उस टीन के डब्बे को, आप टीन डब्बा कर लो, है ना, तो उसको फिर अनइंस्टॉल कर दिया गया बाय द फेसबुक, ठीक है। तो अगर अगर ऐसी कंडीशन है, ओके, तो कंडीशन मे बी राइज लाइक द रोबोट मूवी, है ना, बूम बूम रोबोट, है ना। तो उस तरह की कंडीशन हो सकती है इफ द आर्ट इफ द रोबोट, ठीक है, इज वेरी, आप क्या बोल सकते हो, क्लोज, if the robot get very close, go to the very close to the human emotions, okay, तो इन दैट केस वो बिल्कुल रिप्लेस कर सकता है, ओके। जैसा कि उसमें आपने देखा था ना कि जो उसमें रोबोट होता है उसको क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम्स ही क्रिएटेड द इमोशंस, ओके, उसके अंदर भी ह्यूमन इमोशंस आने चालू हो जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए फिर उसको क्या बोलते हैं, जो हीरोइन होती है उससे लव हो जाता है, समथिंग, है ना, वैसे कुछ कहानी है उसमें, ठीक। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि देयर इज द वर्ड, एंड दैट मूवी वाज द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द
मशीन विद द ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। तो उसमें आप कह सकते हो कि ऐसा कुछ अगर होने पे तो फिर थोड़ा सा खतरनाक, ठीक है, क्लियर, ओके। So here robots are widely used in the what manufacturing, assembling, packing, transport, ठीक है, अर्थ एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, सर्जरी, वेपनरी, ठीक है, लेबोरेटरी रिसर्च, सेफ्टी एंड मास प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, ओके। दैट मीन्स कि रोबोट जो है बहुत सारी जगह पे यूज किया जा रहा था, तो देयर इज अ वास्ट एप्लीकेशंस एंड द वेरियस एप्लीकेशंस हैज गिवन, ठीक है, अबाउट द रोबोट्स, क्लियर। So Isaac Asimov have the firstly used the what word robotics. Okay, and actually the Asimov Saab has given the three major laws of the robotics, which is considered as the Asimov's law of robotics. ठीक है, इन्होंने अपना कुछ लॉ दिया इसके रिगार्डिंग द रोबोटिक्स, ओके। And the law was that there is actually 3 points. 3 points are here. The first point is the a robot may not injure a human being or through inaction. Okay, allow a human being to come to harm. ठीक है, ओके। इन्होंने ये बोला कि कोई एक रोबोट होगा, ओके, रोबोट, ओके, तो वो क्या करेगा कि ही सॉरी अ रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एंड ह्यूमन बीइंग और थ्रू इन एक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म, ठीक है। बोल रहे हैं कि वो कभी किसी इंसान को इंजर या इंजरी नहीं कर सकता है, किसी को घायल नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही वो अपने एक्शन से कभी किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को थ्रेट में डालेगा, ठीक है, इन द डेंजर, क्लियर। सेकेंड इज दैट कि रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर गिवन इट बाय ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। देखो एक्चुअली ऐसा है, पहले लॉ में इन्होंने ये बोला कि रोबोट्स may not harm the human beings, okay, but second law, the second points of this law is saying that robot, okay, must obey the order given it by the human beings, okay. That means कि if the human beings is actually giving any order to the robot, okay, in that case he must obey that order. But this second law of the robotics, okay, even actually creating a conflict with the first law. अब सपोज दैट पहले हम बोला कि इसको हार्म नहीं करेगा, बट अगर ह्यूमन बींग्स हैव गिवन द ऑर्डर कि ठीक है इसको शूट कर दो, ओके, तो इन दैट केस रोबोट मस्ट ओबे द व्हाट कमांड गिवन बाय द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट a robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the फर्स्ट और सेकंड लॉ, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि रोबोट विल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड इन दैट केस नेवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ ऑफ द रोबोटिक्स, ठीक है। तो दोनों जो भी है हमारा, इसमें कोई भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है, ओके। थोड़ा सा इधर हम बात करेंगे इवोल्यूशंस ऑफ द रोबोटिक्स के बारे में। इवोल्यूशंस ऑफ रोबोटिक्स, ओके। तो ऐसे बात करेंगे, देयर इज फर्स्ट जनरेशन, the first generation robots, okay, from 1970
from 1970 and consists of stationary, non-programmable, non-programmable electromechanical device, electromechanical device without sensor, without sensor. Okay. Without sensor. Here is the second generation. Second generation, and this is started from 1980. Clear? And contain contain sensors and programmable. Clear? The next one is the third generation. थर्ड जनरेशन. इतना सिंपल वर्ड्स में मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. क्लियर? तो इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू दैट व्हाट इज द क्या बोल सकते हो, क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द रोबोटिक्स. ओके, so you have to write down this question. Clear? Okay, the third generation developed between 1990 and present. ठीक है, अभी तक एंड प्रेजेंट. ठीक. मशीन कैन बी स्टेशनरी और मोबाइल. ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो मशीन कैन बी स्टेशनरी एंड मोबाइल. ओके, स्टेशनरी दैट मीन्स स्टेबल. ठीक है, उसमें मूवमेंट नहीं होता था, कहीं आ जा नहीं सकता था. क्लियर? एंड मोबाइल दैट कैन मूव. ओके, with sophisticated programming, with sophisticated programming, speech recognition, the speech recognition ability is also here. Okay, and synthesis, sorry, and speech recognition and synthesis. Okay, and other advanced feature. अच्छा, इसी को मैं ऊपर लिख रहा हूँ. and other advanced feature. Okay, feature. Now the next is the fourth generation. लिख कर फिर मैं इसको अभी अच्छे से आपको बताऊंगा कैसे लिखना है. ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट phase like artificial intelligence, self replication, self assembly, and nano scale size. देखो,
Hmm. So here is evolutions of the robotics. Okay, so we can say that the first generation of the robots or robotics is actually started from the 1970. Okay, and in the first phase, ठीक है, in the first phase the robots developed, ठीक है, the developed robots are the stationary in nature. Stationary that means they can not move. Okay, उनको किसी एक जगह पे ही क्या कर दिया जाए, स्टेबल कर दिया जाए तो अपना टास्क परफॉर्म करेंगे. दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मोबाइल इन नेचर. ओके, सो दे आर द स्टेशनरी एंड नॉन प्रोग्रामेबल ऑल्सो. ठीक है, उनमें कोई प्रोग्राम नहीं किया जा सकता था, उनको ह्यूमन बींग्स के द्वारा चलाया जाता था. ठीक है, ओके. एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल दैट मीन्स दे कंज्यूम द इलेक्ट्रिक एज अ पावर. ओके, और उसमें कुछ ऐसे मैकेनिकल उसके वो लगे रहते थे जो शिफ्टिंग होती थी. क्लियर. तो दिस इज कंसिडर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस एंड विदाउट सेंसर. कोई इसमें सेंसर्स नहीं होते, कोई सेंसर्स नहीं थे, तो दे कैन नॉट grasp or they cannot observe any types of the sensors. Okay, the second generation is started from the 1980. Okay, and it contains the sensors and the programmable. That means that in the year of from the year of the 1980, the developed robots are programmable as well as they are containing the sensors also. Clear. Okay, now the third phase, and the third phase is started from the 1990 and till till the date. Okay, तो 1990 से दिस इज स्टार्टेड एंड अभी तक ये चल रहा है जो थर्ड जनरेशन है. एंड इन दिस द मशीन कैन बी स्टेशनरी एंड मोबाइल. ओके, दैट मीन्स मशीन जो भी रोबोट होगा इट कैन मूव और इट मे बी स्टेबल. ओके, वो स्टेबल भी कर सकता है और क्या कर सकता है, मूव भी कर सकता है. देयर आर द सेवरल एग्जांपल्स. ओके, ऑफ द स्टेशनरी एंड द मोबाइल. मोस्ट ऑफ द humanoid robots are mobile in nature but some of the stationary also. ठीक है, तो ऐसे कुछ humanoid robots हैं जैसे अभी बात करेंगे the Sophia robots. Okay, the Sophia robots is the first robot which have actually got the citizenship of the Saudi Arab. Okay, तो उसको वहाँ का क्या मिल गया, सऊदी अरब को सिटीजनशिप मिल चुका है. किसको, सोफिया को, है ना. तो सोफिया इज व्हाट, सोफिया इज अ रोबोट. ठीक है, ओके. देखो, तो दिस इज ह्यूमनाइड रोबोट एंड इट इज व्हाट, इट इज मोबाइल नेचर. ओके, एंड द सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो डन बाय द third phase of the you can say the third generation robots. Okay, so speech recognition and the synthesis ability is also here. That means कि अगर उनके अंदर ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि वो डिफरेंट लैंग्वेज को क्या करें, अंडरस्टैंड कर सकें, मेकिंग अंडरस्टैंडिंग इन द डिफरेंट लैंग्वेज. सो इन दैट केस दे हैव द एबिलिटी. क्लियर. आफ्टर दैट देयर इज द एंड द अदर एडवांस फीचर्स ऑल्सो. अदर एडवांस फीचर दैट मीन्स द मेनी ऑफ द सेंसर्स आर ऑल्सो वर्किंग. ठीक है, बहुत सारे सेंसर्स भी उसमें क्या है, लगे होते हैं. ठीक, तो सेंसर्स आर प्रोवाइडिंग द सेंसेस. ठीक है, and by the receiving the senses in the different condition they can analyze the situations also. Clear. The next one is what, fourth generation. Actually the fourth generation is under developing generation considering. Okay, and अंडर डेवलपिंग है, दैट मीन्स कि इसमें अभी बात मतलब कि जो भी प्रोसेस है, सॉरी रिसर्च है, वो चल रही है. And after the development of the fourth generation, okay, the robots are AI. The robots would be the AI enabled. They will have the ability of the self replications, self assembling, and the nano scale size robots are also, ठीक है, will present. ठीक है, देखो ऐसा है कि जब
फोर्थ जनरेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एआई दैट मीन्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी भी डेवलप कर दी जाएगी। क्लियर? और अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक द सम अनदर एबिलिटीज लाइक द सेल्फ रेप्लिकेशन और सेल्फ असेंबलिंग। ठीक है, तो जैसे कि अगर उनको ज़रूरत होगी कि उनको अपना, जैसे सपोज करो कुछ दूर से उनको कोई चीज़ पिक करना है और उनका जो एक्चुएटर है, अभी बात करेंगे क्या होता है, उनका जो हैंड है वो छोटा पड़ रहा है, तो इन दैट केस वो अपने उस हाथ को खोलेंगे और जो बड़ा हाथ होगा उसको लेकर के फिट कर लेंगे, खुद से फिट कर लेंगे, और उसके बाद फिर वो टास्क परफॉर्म करेंगे। ओके, तो दिस इज कंसिडर वो दिस इज द सेल्फ रेप्लिकेशन और सेल्फ असेंबलिंग। ठीक है, दे कैन दे कैन क्रिएट द सेम रोबोट्स एज देमसेल्फ। ठीक है, एज इट इज। ठीक है, देमसेल्फ। तो ये सब सारी जब एबिलिटीज उनके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो वी विल इंटर इनटू द फोर्थ जनरेशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द रोबोटिक्स। ठीक है, एंड नैनो स्केल साइज के भी रोबोट्स डेवलप किए जा रहे हैं अंडर द फोर्थ जनरेशन ऑफ द रोबोटिक्स। ठीक है, तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द रोबोटिक्स। क्लियर? बहुत सारे रोबोट्स के बारे में हम बात करेंगे, विद एग्जांपल हम बात करेंगे कौन कौन से रोबोट, और इसका बड़ा एप्लीकेशंस है रोबोट्स का। ठीक है, फ्रॉम द मेडिकल सेक्टर्स टू द मिलिट्री पर्पस, ओके यू कैन से इन द मिलिट्री एप्लीकेशंस। ठीक, बहुत इसका यूज़ है। टाइप्स ऑफ रोबोट्स में भी हम बात करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रोबोट्स आर अवेलेबल हियर। क्लियर? चलो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दी रोबोट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में, कि उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं रोबोट्स के, एंड वाट आर दैट। ठीक है, वो सब क्या है? रोबोट्स कंपोनेंट। ओके। छोटा सा एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। एक जो रोबोट जो है, मतलब जो जनरल फिगर बना रहा हूँ मैं, क्लियर है? सारे रोबोट्स ऐसे नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ द रोबोट्स विच आर ऑल्सो कंसिडर लाइक द वोट, लाइक द मोबाइल रोबोट्स, और यू कैन से ह्यूमनाइड रोबोट्स। ठीक है, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से लुक लाइक होंगे। उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग से बना रहा है, लेकिन दिस इज द बेसिक, क्या बोल सकते हैं उसको, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो वो चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे बिल्कुल इस साइड में भी अपने को बनाना है, लाइक ओके। तो
तो इसको ऐसे बीच में ओपन नहीं करना है, बिल्कुल एकदम दिस इज लुक जस्ट लाइक अ what, just like a human being. Okay. This is considered the charged couple device. Clear? Charged couple device. मेहनत करा. This is on board computer. Okay. Manipulator. This is the end effector. Gripper. Okay. बस ठीक. चलो देखो इधर हम बात करेंगे. We will just talking about the components of the robots. Okay. So these are the basic components of a robot. So you can see this is the structure of robot. Okay. So here is charged couple device. Okay, and this charged couple device is just a equivalent of the what? Equivalent of the eyes of human being. So this is considered the eyes. Okay, eyes, and the charging is done by this डिवाइस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इससे चार्जिंग भी किया जा सकता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज द मैनिपुलेटर. यू कैन सी दिस इज द मैनिपुलेटर. मैनिपुलेटर यहाँ से ये स्टार्ट है. व्हाट इज द मैनिपुलेटर? विच कैन परफॉर्म द मैनिपुलेशन. ओके, मैनिपुलेशन दैट मीन्स द चेंजेस. अगर कोई भी इधर उधर की चीज़ें इधर उधर उठा के करना है, रखना है, तो इट इज़ डन बाय दिस मैनिपुलेटर एंड विच इज जस्ट सिमिलर टू द हैंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, हैंड है. किसका? रोबोट का. फाइन. देन द एंड इफेक्टर. End effector is nothing. This is considered the base of the manipulator and is this fixed to the base support and at its other free end the end effector is attached. ठीक है, it perform task like a palm and finger of the human beings. जैसे हमारा ये हाथ होता है ना, तो हाथ के लास्ट का जो इफेक्टर है दैट मीन्स जो इफेक्ट दे. ओके, कोई भी चीज़ हम होल्ड करेंगे, कोई भी चीज़ हम क्या करेंगे, उसको हुक करेंगे. क्लियर? कोई भी चीज़ हम पुल करेंगे या पुश करेंगे. ओके, तो दिस इज द कंसिडर द एंड इफेक्टर. ओके, so the end effector is what? Like a palm. ठीक है, and this is the gripper. Gripper is just like a finger. ठीक है, हम अपना ग्रिप कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ द फिंगर. अगर फिंगर्स ना होते तो हाउ कैन वी मेक द ग्रिप? ओके, किसी भी चीज़ पे ग्रिप नहीं बन सकता था. क्लियर? तो दिस ग्रिपर इज जस्ट लाइक अ फिंगर, just like a finger of the robot. Okay, and end effector is the palm of the robot. Clear?
ओके, तो हियर इज सम लोकोमोटिव डिवाइस आर ऑल्सो, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारे लेग्स, दीज आर द locomotive devices, clear? In the humanoid robots, the pedals are here, the pair pedals are here, pedals means pair, ठीक है, in the pair legs. So this is responsible for the locomotion. Okay, so this is considered the locomotive devices, clear? So the locomotive devices, the for the robot, the power for the movement is provided by the motors. Okay, अच्छा, ये लोकोमोटिव डिवाइस मत बोलो इसको, आप ये बोल सकते हो कि लोकोमोशन यहाँ से होता है। द डिवाइसेस में कंसीडर करेंगे लाइक द मोटर्स। ओके, मोटर्स आर मे बी द हाइड्रोलिक मोटर्स और द इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है। हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या होता है, क्या फर्क होता है दोनों में? हाइड्रोलिक समझते हो, व्हेन द स्पीड इज वेरी स्लो बट प्रेशर इज हाई, ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, एंड स्पीड स्लो होता है। तो सपोज करो कि जैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ओके, तो इन दैट केस द रोबोट कैन लिफ्ट द हैवी मटेरियल, ठीक है, हैवी मटेरियल्स। अब किसी भी हैवी चीज को उठाना है तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, क्लियर, लिफ्ट करना है, ठीक। तो इन दैट केस द प्रेशर मस्ट बी हाई। ओके, तो इन दिस काइंड ऑफ द ऑपरेशंस और एफर्ट द हाइड्रोलिक मोटर इज यूज्ड, ठीक है। बट इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर्स देयर इज द लो प्रेशर, ठीक है, देयर इज द प्रेशर इज लो बट द स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज हाई। दैट मीन्स कि अगर कोई जल्दी से कोई टास्क परफॉर्म करना है तो इन दैट केस द लोकोमोटिव डिवाइस शुड बी इलेक्ट्रिक इन नेचर। ओके, द मोटर इज इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, तो उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से वो क्या कर सकता है, चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इन दैट केस वो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं कर पाएगा, क्लियर? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड द हाइड्रोलिक मोटर्स। देन द डिजिटल कंट्रोलर। ओके, the digital controller, this is a computer, okay, computer, and आप कह सकते हो the complete control of the robot is deals with this what digital computer which is acts as a controller to the robot, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो इसकी तरह क्या करेगा, वर्क करेगा एज अ कंट्रोलर। ओके, नाउ वी विल जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेंसर्स। ओके, बहुत सारे सेंसर्स भी होते हैं इसमें। अब इसमें सेंसर्स में शो नहीं कर सकता था बिकॉज सेंसर्स क्या होते हैं, उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, क्लियर, वो बाहर से ऐसे देखने पे नहीं दिखेंगे, ठीक, उसके अंदर सेंसर्स होंगे। एंड द सेंसर्स आर एक्चुअली द कंट्रोलर ऑफ द रोबोट कैन नॉट डू एनी मीनिंगफुल टास्क इफ द रोबोट इज नॉट विद द कंपोनेंट सेंसर्स, ठीक है। देखो एक चीज है, इफ द सेंसर्स आर नॉट अवेलेबल इन द रोबोट, ओके, तो हाउ द computer read out the situations, ठीक है। that means the informations regarding the different kind of situations is provided to the computers of the robot by the sensors, ठीक है। तो sensors जो होते हैं वही क्या करते हैं, उसको informations provide कराते हैं, किसको, computers, clear? so in that case the sensor is very must for the robots, okay, and with the help of this sensors the controller of the robot is performed its task, clear, ठीक है। that means कि कंप्यूटर तभी काम करेगा, क्लियर। एंड जैसे अब अगर इसको ऐसे समझें लाइक दैट आवर ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक, एंड इफ इन आवर बॉडी द सेंसर्स आर नॉट वर्किंग, दैट मीन्स कि हमारी आईज अगर क्लोज है, ठीक, आईज आर लाइक द सेंसर, ओके, इफ वी क्लोज आवर आईज देन हाउ कैन आई ब्रेन आइडेंटिफाई द इमेजेस। इसीलिए जब आप आंख बंद करते हो तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, नहीं दिखाई देती ना, क्यों नहीं दिखाई देती, क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है वो ब्रेन कोई भी चीज़ को रीड आउट करता है विद द हेल्प ऑफ द सेंसर्स। इन दिस केस द सेंसर इज स्टॉप देयर वर्किंग, ठीक है। अब आंख बंद, दैट मीन्स कि सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं, ओके, तो सेंसर्स आर नॉट प्रेजेंट विच इज लीडिंग द व्हाट, क्या बोल सकते हो कि अच्छे से परफॉर्म, मतलब ब्रेन या कंट्रोल करो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो लाइक दिस द सेंसर्स आर वेरी मैंडेटरी इन द केस ऑफ द रोबोट्स, क्लियर? ओके, so capable of intelligence without the data supplied by the
सेंस ऑर्गन, चलो कोई नहीं. Sensors are nothing but measuring instruments which measure quantities such as position, velocity, force, torque, proximity, temperature, etc. The current sensors ऐसा कुछ नहीं, लेकिन sensors जो होते हैं, ठीक है, they are measuring the instruments, ठीक है, they are just acts as a measuring instruments, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. फाइन, दिस इज द बेसिक what function of the sensors which measure the quantities such as the such as the position, what is the position of the robot, what is the velocity of the robot, okay, what are the forces, ठीक है, exerted from the outside environment to the robotic body, ठीक. And after that what are the torque, torque समझते हो ना, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक तरीके का पावर होता है, किसी भी मोटर का पावर होता है. टॉर्क कितने एनएम का टॉर्क मतलब प्रोड्यूस कर रही है कोई मोटर, क्लियर. एंड द प्रॉक्सिमिटी, द टेम्परेचर एक्सेट्रा, ठीक है, दैट मतलब कितना क्या बैलेंस कितना है, ठीक है. एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक. तो ऑल द सेंसेस वुड बी प्रोवाइडेड टू द ऑन कंट्रोल कंप्यूटर विच इज known as the on board computer which is known as the controller of the robots, ठीक है, for the different kind of the sensors, ठीक है. ओके, तो आपने इसमें देख लिया है यहाँ पे. अच्छा, एक चीज़ और आप देखोगे, इन द केस ऑफ द रोबोटिक सेंसर्स, आई थिंक ये आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है. चलो देखो बात करते हैं. एक्चुअली रोबोटिक सेंसर्स आर टू टाइप्स. कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द proprioceptives, okay, and the second one is the exterioceptives, okay. So what are called the proprioceptives and the what are called the exterioceptives, okay. Actually in the proprioceptive case there is the what, self maintenance is occurs, self maintenance, the self maintenance is occurs in the case of the proprioceptives. that means कि if the any types of the क्या कह सकते हैं ऐसे सेंसर्स जो कि क्या करता है, सेल्फ मेंटेनेंस कॉज करता है. दैट मीन्स ऐसे कोई एग्जांपल लो, लाइक द एक्सीलरोमीटर, ठीक है. द एग्जांपल इज लाइक एक्सीलरोमीटर, ओके. दैट मीन्स जो इन बिल्डिंग एक्सीलरोमीटर है, ओके, इट इज एक्सीलरोमीटर इज फॉर व्हाट, एक्सीलरोमीटर इज एक्चुअली providing the information regarding the speed of the robots, ठीक है. And if the speed of the robot is very high or very low as per the requirement, so in that case accelerometer providing the information to the robots कि हाँ अब आपको नीड है यहाँ पे स्पीड को बढ़ाने की, स्पीड को कम करने, ठीक है. तो एक्सीलरेटर से बना है, एक्सीलरेशन से बना है एक्सीलरोमीटर. तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, क्लियर. Like the inclinometer, or you can say the gyroscope. क्या होता है गायरोस्कोप? क्या होता है? In the space technology and in the satellites, there was also the gyroscope was present in the satellite. Okay, basic components में हमने देखा था कि gyroscopes are present there. ठीक है, क्या होता है गायरोस्कोप? Comment below if someone is online. Okay, what are the gyroscope? Online एक दो. Okay, comment below please कि what is gyroscope, क्या होता है गायरोस्कोप. In the space technology, ठीक है, we have discussed already about the gyroscope. Okay, next is the exterioceptive. एक्सटीरियोसेप्टिव्स, अब देखो इधर क्या है, सेल्फ मेंटेनेंस, फाइन.
and the exteroceptive is the actually providing the information to the robots. ठीक है, हाँ, provide the robot information to the interact with the outside environment. Okay, that means कि from outside environment, how the robot is interact with the outside environment, this kind of the information is provided by this type of the sensors known as the exteroceptive sensors. Okay, तो अब ऐसे इसमें लिख सकते हो, provide the robot provide the information to robot interact with outside environment. Okay, अब एग्जांपल दूंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ द सेंसर्स? एग्जांपल्स लाइक द सोनार. व्हाट इज सोनार? अभी ये गायरोस्कोप का भी कोई कमेंट नहीं है मेरे पास. ओके, व्हाट इज सोनार? Sonar is stand for the sound navigation and the ranging. Okay, suppose that is if any sonar sensors is inbuilt in the what? In the robot. Okay, so in that case it is releasing the sound waves. Okay, and the sound waves is actually providing the information regarding the object which is present outside the environment. ठीक है, present in the outside environment. जैसे सोनार का काम क्या होता है कि सोनार आर इनबिल्ड इन द, इसमें हमने बात किया था इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी, सोनार आर इनबिल्ड इन द सबमरीन्स. ओके, तो जहां पे लाइट नहीं जा सकती है, इन दैट केस द साउंड वेव्स आर व्हाट? प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द something, or you can say the regarding the objects present in the outside environment. Okay, so here the sonar is the example of the exteroceptive sensors. Okay, next, like the infrared sensors, also here infrared sensors. Okay, next, microphones etc. Clear? So microphones etc, ये सब सारे क्या हैं? These are actually providing the what? Providing the information to the robot to interact with the outside environment. ठीक है? So these are the basic component of the what? हाँ, एक component अभी आपका और बचा है. The component like the actuator. हाँ, हमने बात किया था ना about the actuator. What are the actuator? देखो बात करते हैं. Actuator. What is the actuators? एक्चुअली इन आवर बॉडी, अगर हम ऐसे समझें, हमारी बॉडी में अभी तक बॉडी से सब समझ रहे हैं ना, लाइक द मैनिपुलेटर इज द ह्यूमन हैंड. ओके, द ग्रिपर दैट मीन फिंगर्स, क्लॉज, पंजे. ओके, हमने एंड इफेक्टर. ओके, like this the actuators are present in the robot, which is considered the muscles and joint of robots. Muscles and joint of robot. What is the functions of the muscles of the human body? It providing the strength to the body. Okay, और हमारी जो बोन्स, जो हैंड होते हैं ना, दे जैसे हैंड है और शोल्डर है, राइट? So they are joint with each other through the joints and the muscles. Muscles like the ligaments, okay, like the tendons, okay. So like this, the actuators are considered as the joint or
muscles of the what? Of the robots. Okay. So these actuators may be hydraulic, or you can say the pneumatic. This may be hydraulic or electric. Okay. And अब वो हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है? लाइक द हाइड्रोलिक न्यूमेटिक, hydraulic like the pneumatic. Okay, a more pressure, or you can say the heavy pressure, and slow speed. And here the high speed and low pressure. High speed and low pressure. Okay, in the case of the electric what? Actuator, the electric motor. Okay, so these are the actuator are the muscles and the joint of the robot. Clear? So this is the what? This is the basic components of the robot. ये basic components होते हैं इसमें. कोई कमेंट नहीं. ओके, गायरोस्कोप है ना. Gyroscope is here for the altitude control, not attitude. Attitude nahi, right? Altitude control. Okay, gyroscope is actually using for this is the use of the this is the importance of the gyroscope. Clear? So these are the what? These are the basic components of the robots. ठीक है, जो हमने बात किया. चलो अभी if we are just talking about the what types of the robots. Types of the robot. According to the use of the robots, there is several types of the robots. ठीक है, several types of the robots. Like if the robot is working in any banks, so we can consider this is the what? This is the banking robot. Okay, using for the chatting to the human beings, so this is considered the chat bot. क्या बोलेंगे? Chat bots, chat robots, chatting robots, chat bots. Okay, if the robot is what using in the medical sector, or you can say using for the medical purposes, so this kind of robot is considered the what? Medical robot. Okay, using in the space, that means space robot. Okay, so according to the applications and the on the basis of the use of the robots are the several types, but mainly here is only three types of the robots which we have to be discussed. Like the first is the domestic robot. Domestic robots. The domestic robots are those robots which are actually using for the what? Using for the domestic purposes. Okay, for the domestic purposes. So domestic robot is a robot is used for the household chores, that is for both indoor and the outdoor functions. ठीक है, indoor and the outdoor functions. The highest level domestic robot is the domo bot. ठीक है, so domestic robot is also called the domo bot. Domestic robot bot. Okay, domo bot. Okay, which is autonomously connected to a Wi-Fi network or smart environment. ठीक है, it is automatically connected to the Wi-Fi. Connected to the Wi-Fi network or smart environment.
smart environment. Okay, domo bot. The kind of the what? Kind of the Alexa. Alexa is not a mobile robot, but this is also considered the robot, and it's a kind of the stationary robot, stationary type robot. Okay, Alexa. It can connect to the Wi-Fi and just following your commands. आपने जैसे बोला ना, Alexa, please play कभी शाम ढले. Now Alexa is playing कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, fine. So this is what? This is a kind of the robot. It can connect to the Wi-Fi or smarter environment, आप जो भी data providing environment, and it can perform. And this is using for the domestic purposes. Okay. Today बहुत सारे ऐसे जैसे in the some cases like the refrigerators. Okay. And refrigerators for what? For the purpose of the, अभी उसमें ऐसे रेफ्रिजरेटर आ गए ना जो कि उसमें दूध रख दो तो दही बन जाएगा, कर्ड की तरह, वो कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, उसको कर्ड बना देगा. फाइन. So in that case you are giving your command and this is happening. Okay. आप दूर कहीं बैठे हो और उसको आपने कमांड किया कि प्लीज स्विच ऑन. ठीक है, स्टार्ट वॉशिंग द क्लॉथ्स, द वॉशिंग मशीन इज स्टार्टेड. This is also kind of what? Kind of the domo bot, kind of the domestic robot. And some another types of the robot are also using for the domestic purposes. ठीक है, बहुत सारी मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एंड टुडे ना द डेवलपमेंट ऑफ द रोबोट्स इज एक्चुअली वेरी, आप क्या कह सकते हो, वेरी मेजर कंसर्न रिगार्डिंग द ह्यूमन वैल्यू. मतलब ऐसे से रोबोट्स ऐसे से मतलब डेवलप किए जा रहे हैं, इन्वेंट किए जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ओके, आपके घर में मेड नहीं आती, तो यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द बेटर ऑप्शन एज अ रोबोट. यू जस्ट गिव द कमांड टू द योर रोबोट एंड द रोबोट इज रेडी टू मेक द कुक फॉर यू. ठीक है, रेडी टू कुक द फूड फॉर यू. तो कुछ दिन बाद क्या ऐसे पकड़ के आपका जबड़ा भी क्या करेगा, वो पूरा एकदम पकड़ के स्विमिंग करा देगा. आपको मूवी मतलब चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर. ह्यूमन वैल्यू उससे थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमन वैल्यू डिस्टर्ब होगा. एंड द डेवलपमेंट ऑफ रोबोट्स इज ऑल्सो लीडिंग द व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज अ मेजर कंसर्न नाउ डेज. ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके. तो मशीन बनते जा रहे हैं, इंसान की जगह लेते जा रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. क्लियर. तो डोमेस्टिक रोबोट. द सेकेंड वन इज द इंडस्ट्रियल रोबोट. इंडस्ट्रियल robots. Okay. So in industrial robots, it is actually defined as the automatically controlled and the reprogrammable multi-purpose or the multifunction manipulator designed to move in two or more axes or with multiple degree of the freedom to manipulate an object. देखो इसमें ये बोला गया कि this is what? This is a multifunctional, okay, multifunctional and the multi-purpose types of the robots, and this is a reprogrammable robot actually. That means suppose करो कि जैसे कोई रोबोट है बहुत किसी इंडस्ट्री में. अच्छा, इंडस्ट्रियल रोबोट, दैट मीन्स दिस इज इट वुड बी यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज. क्लियर. इन एनी प्रीमाइसेस देयर इज व्हाट? असेंबलिंग ऑफ द मोटर कार. ओके. तो इन दैट केस द रोबोट आर देयर. आपने देखा होगा ना, कभी वीडियो पे सर्च करना कार की असेंबलिंग कैसी होती है. ठीक है, टाटा कार की असेंबलिंग कैसी होती है, तो आपने उसमें देखोगे ना. तो देयर आर द सेवरल रोबोट्स. ठीक है, एंड रोबोट्स आर व्हाट? रोबोट्स आर प्लेस्ड इन अ सिक्वेंशियल मैनर. तो एक क्या करेगा, एक उसका वो डोर उठाएगा, दूसरा उस पर ऐसे उसको लगाएगा, दूसरा आकर के उसको तुरंत स्क्रू टाइट करेगा. फाइन. ऐसे ऐसे करते फिर आगे चला जाएगा. तो what actually this is the robotic operations, ठीक है, which is done inside the industry. Suppose that this is a single program. ठीक. After sometimes if there is a need
of that kind of the robots for another purpose, for another what process. So in that case we can just reprogram that robot और उस robot को वहां ले जाके रख देंगे. Now the robot is actually performing the packing. अभी तक क्या कर रहा था, वो assembling कर रहा था. We can reprogram. Now the robot is available, the same robot is available for the packing purpose. So the industrial robots are the what? Industrial robots are the reprogrammable actually. Okay. And multifunctional and the multidimensional also, and it can work, it can perform their functions at the what, at the multiple degree and one or more axis. किसी भी एक्सिस पे काम कर सकते हैं वो. ठीक है, मतलब चारों तरफ मूव कर सकता है. ठीक, इधर कर सकता है, ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है. ओके, so it can perform one or more axis. Okay, so this is considered the domestic robots. Okay, the next one is the humanoid robots. The very most important robot, मुझे बहुत पसंद है ये. ठीक है, humanoid robot. Humanoid robot. It is actually robot that the what resembles human beings in the appearance, which has bipedal gait or two leg locomotion. देखो अभी ये क्या है ना, these are the robots resembles to human beings, and this is the what, bipedal. Bipedal, that means two legs locomotion, two legs locomotive. ओके, जैसे ह्यूमन बींग्स दो पैर पे चलता है ना, लाइक दिस, है ना. देखो बहुत सारी मूवी देखा होगा आपने ना, हॉलीवुड मूवीज देखा होगा, इंडिया में भी रोबोट बन चुका. तो चिट्टी वॉज व्हाट, चिट्टी वॉज द ह्यूमनाइड रोबोट. चिट्टी वही वही, हाँ, रजनीकांत वाली, है ना. चिट्टी वॉज व्हाट, चिट्टी वॉज ह्यूमनाइड रोबोट. क्लियर. उसके पास दो पैर थे, वो दो पैर से क्या करता था, चलता था. क्लियर. ओके, so two legs locomotion is occurs in the case of the humanoid robot, and its appearance is just like a what, just like human being. Okay, and can perform a task without any outside assistant. That means अगर आप उनको सामने से देखोगे ना, they just look like a human beings. They have the hands, two legs, they have the mouth, mouth, they have the ear, eyes, पूरा appearance लगेगा. और उस पर क्या है ना कि बिल्कुल स्किन कलर के सिलिकॉन लेयर का क्या किया जाता है, बिल्कुल एकदम सिलिकॉन लेयर प्लेस किया जाता है. किस कलर का, स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर. ठीक, तो दे लुक लाइक ह्यूमन बीइंग. ओके, अंदर से पूरा मशीन होता है वो. फाइन. जैसे हमने बात की ना, सोफिया इज व्हाट, सोफिया इज अ ह्यूमनाइड रोबोट. ह्यूमनाइड रोबोट. ओके, अभी बहुत सारे ऐसे रोबोट्स हैं, विद एग्जांपल्स वी विल डिस्कस अबाउट देम. ठीक है, तो सोफिया इज अ ह्यूमनाइड रोबोट. तो लुक लाइक्स अ व्हाट, लुक लाइक्स अ लेडी. तो बिल्कुल कैसी दिखती है, लेडी अपीयरेंस. क्लियर. So this is considered the humanoid robot. Okay. And हाँ, ये बोल रहे हैं कि it can perform a task without any outside assistant. हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इनके पास सब कुछ है, इनके पास हाथ है, इनके पास पैर है, तो दे कैन परफॉर्म एनी टास्क विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंट. बस एक बार प्रोग्राम उनमें रन करा देना है. यस, इन दिस सिचुएशन यू हैव टू डू लाइक दिस, और वो सिचुएशन हैंडलिंग कर देंगे सारी. ठीक है, वो उस तरीके से परफॉर्म करेंगे. एंड दैट इज द रीजन कि जापान में एक, इन द जापान देयर इज अ रोबोटिक रेस्टोरेंट, रोबोट रेस्टोरेंट. इन दिस रेस्टोरेंट, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टाफ इज रोबोट. ओके, दैट मीन्स आप एंटर करोगे, जो गेट कीपर है इज ऑल्सो अ रोबोट.
आप अंदर जाओगे, जो आपका ऑर्डर लेगा, ही इज ऑल्सो रोबोट. द वेटर हु कैरीज योर वॉट ऑर्डर, ऑल्सो रोबोट. So all the robots are present in this robot restaurant. The restaurant is in Japan. Okay, so without any external assistance, it can perform their task. Okay, so here, it is enabled with the self maintenance also. Self maintenance, which means it can recharge itself. Okay, that means कि अगर उनको लगा कि now the battery is getting low, so in that case he just what, ये जस्ट अपना क्या करेंगे, प्लग निकालेंगे और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा वहाँ देख करके प्लग इन करके और अपने आप को चार्ज कर लेंगे. तो दे हैव द टेंडेंसी फॉर द सेल्फ मेंटेनेंस. अगर उनका कोई तार वगैरह कहीं से वायर वगैरह क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो इन दैट केस वो अपने से उसको क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे. ओके, so they have the what, they have the self maintenance ability actually. Okay, so they can recharge by themselves itself. So it can recharge. दे मत बोलो यार, मैं तो रोबोट बोलते बोलते इनको एकदम रियल समझने लगा हूँ. These are machine actually, so it can recharge itself. ठीक है. So autonomous learning, which is what, which is to learn or gain new capabilities without any outside assistance. That means autonomous learning. उनके सामने if you have just talking in English at the what, at the front of any humanoid robot, so he can learn the same language which you are using. Okay, same language use करेंगे and कुछ देर के बाद वो आपसे उसी language में बात करेंगे. Okay, so these are considered the humanoid robots. Okay, in the next class we will discuss about some robots. We will discuss the examples of the robots. हम उसमें कुछ नाम with name we will discuss about the robots. Okay, and especially for the humanoid robot. ठीक, उसमें हम कुछ basic information, basic जानकारी होगी, उसके बारे में बात करेंगे. So for the day, I think this is enough. Okay, so we will continue with this robotics chapter, in which we have to discuss further the applications of the robots. Okay, and after the applications of the robots, we have to discuss about the evolutions of the robots year by year. Okay, and with the suitable examples. ठीक है, तो उसमें हम suitable examples के साथ सारी बात करते चलेंगे कि when the first robot is formed or invented or developed. Okay, तो हम सब उसके बारे में सब कल बात करेंगे. Okay, so for the today this is enough. So thank you so much. Bye bye, take care and be safe. Jai Hind.